Hello everyone. Hello Gurvinder Vermaji. Hello Vishal. So we will be starting our live video by 5 p.m. So let's everyone come first so no one can miss. Hello Jyoti Pandey sir. Thank you for coming. Hello Raman. Hello Sushant. Hello Sayam. Hope you are well. Enjoying the lockdown. Hello Jay Balaji. Hello Amit. So I just repeat again. We will be starting our live video by 5 p.m. Hello Slava. So today topic of discussion will be HDPlayer, which is having maximum issues. The customer is facing maximum problem in HDPlayer. So today's topic is very important for all of us, and you all will be coming to know new things about it, the new features which have been added. Today also I will be talking in two languages, English and Hindi. So whichever language will be comfortable, you can just follow that. So the page you can see in your front is the last discussed page, last discussed topic basically, which I discussed yesterday in the live session related to controller selection, where I gave two examples, example number one and example number two for a particular screen size. Uh, After the video and after yesterday's live video, I got a call from many of the customers that example two is having some problem. So I just went through the example and I that yes, there was a problem. So who noticed it carefully, who were from the beginning till the end, so they might have noted that. So I was very thankful for them. So actually, what problem the example number two was having that uh, I took the range of C35 controller that was 5,24,288, but my screen size actually was 960 cross 720, which come to 69 sorry 6 lakhs 91,200 pixels. And after that I checked the pixel range of A3, which came around 6 lakhs 55,360. Instead of comparing this 6 lakhs 55,360 with 6 lakhs 91,200, I compared it with the pixel range of C35. So this was basically the fault. So A3 controller in this case is not being used. So you all can try. I am giving you 2 minutes to think which controller we can use here, and you can message in the message box
so that I can see who all are participating. Amit, Vishal, Jyoti, everyone can try. Abdul, hello Priyank. Amit, I am saying that example number two. Yesterday, I told that A3 controller is being used in the given screen size 960 cross 720. So A3 will not be used. So suggest me which controller should I use instead of A3. After 2 minutes, I'll be giving the Karthikeyan, you said C35. C35 yesterday only we compared that C35 control range is coming to 5,24,288. But our screen size is near about 6,91,200 pixels. So C35 unfortunately will not be used in this screen size. Abdul and Vishal have said if see whether is or not. We'll still wait with other replies. John sir is saying that A5. Okay, John sir, we will see whether A5 can be used or not. So basically, the training purpose is to enhance the knowledge of you all so that you can all work in a better way as compared to previous, because you all were facing difficulties in operating HDPlayer in selection of controllers. So that problem we are here to sort it out for you all. Amit, you said A4. Example number first, we already take out A4 resolution into A3 resolution. That is 1280 cross 512 pixels, which come to 6,55,360 pixels. So, and our pixel is 6,91,200. Karthikeyan, you are saying A4 or A5. Rather, we have from the both, either A4 or 5. Sushant is replying with A5. Good. Amit is again saying A5. Okay, we will check Amit. So most of the people have replied A5. Let's check whether A5 can be used or not. So the control range of A5 is 1280 by 1080 pixels, which comes to
13 lakhs 82,400 pixels. So now 13 lakh 82,400 pixels is greater than 6 lakhs 91,200. So we can use A5 controller. So everyone who has replied with A5 controller is the right answer. Thank you all for giving an interest in this question. And it proves that you all are taking it very seriously and you all are enjoying taking a part of this training session. Thank you, Amit. Thank you, Abdul. Thank you, Vishal. Thank you, Kartikeyan. Thank you, Gurvinder sir. So now the time is 5 o'clock. So we will quickly start about the today's topic, that is HDPlayer. So we all know where we use HDPlayer for our full color asynchronous as well as synchronous controller, basically for programming. Secondly, we use it for data content sending. So let's just shift the PPT. So today discuss HDPlayer in brief. So basically, what is HDPlayer? HDPlayer is a software used for configuration first. Second, it is used for sending program and editing program. Sending and editing program is basically done by various ways like LAN cable connectivity, Wi-Fi connectivity, and UDIS connectivity. So let's take an example like we are having any controller like A3, A4, A5, A6. We are having a PC. So what we do with the PC, we connect it in the input port of the sending card, and the output port of the sending card is connected with the receiving cards connected in the cabinets of the screen. So for suppose I am taking an example where we are using 9 cabinets. Cabinets have 9 receiving cards. So what we have to do, we have to connect the laptop with the input port of the sending card, and the output port of the card is connected with the receiving cards respectively in the picture. And the customers have asked that which LAN cable is preferably like Cat 5 or Cat 6. So Cat 6 has a better range, so I will prefer Cat 6 for you all customers to use. Now we move on to HDPlayer configuration steps. So just suppose you have opened the HDPlayer software. What is the first thing that you see on the screen? The first thing that you see on the screen is a pop-up window which will ask you about the controller, like which controller you are, and it will ask about width and it will ask about height. Like what is the total width of your screen and total height of your screen. I am again asking about the total width of the screen, not the total width of one module. So many people do the mistake here. You have to enter the total screen width and total screen height. The second thing is after controller selecting your width, you press OK. Then after that, you have to go in the screen parameters. The screen parameters basically is device model, which I have already told, and the second is resolution, as I already told you, height and width. The scan parameters. The scan parameters comprises of three things.
sending card, connection setting, and receive card setting. These all terms are very familiar with you all: sending card, connection setting, and receive card setting. So I will just explain you a bit what all criterias come under sending card. Sending card, it comes cabinet setting and receive card setting. In sending card setting, you can check how many total receiving cards have been connected with the sending card. Means, for suppose you have connected 20 receiving cards. When you are searching, it is only showing 15 receiving cards. That means that the 15th receiving card is not conveying data onto the 16th receiving card. Means there's some fault between the LAN cable, or there's some issue of power. So it is basically meant for the LAN cable receiving card check, that how many receiving cards are being connected. In the connection setting, we guide the software that how receiving cards, like in which sequence we have connected, assuming that maybe you are in front of the screen or maybe you are in back of the screen, assuming that how you have given the connection of LAN cables from one receiving card to another. The third one is receive card receive card setting, which is the most important part of this software. In this, we have three criterias. One is hub setting, and one is parameters. So I will just tell you what are these three terms. Smart setting, as all of you know, is a process of making the configuration file of a particular module. The hub setting is basically tells that which port we to give the data to the module, and how you have connected your module with the receiving card ports. The third is basically uh, refresh rate, gradation, clock frequency, etc. All these parameters come under the section of parameters. So now let's one controller, that is C10, through a laptop, and we have opened the software HDPlayer. So when we will connect the controller with the laptop, we can see in the left hand side bottom corner, there shows a message: device connected, box player C10, and its version number. So this means connected. This message is not being showing on your laptop or your computer, and instead of this blue color, it is showing red color, no device connected. Means that you have to check the LAN cable, or you have to check the connection of your laptop settings. जब आप अपने लैपटॉप से एक कंट्रोलर को कनेक्ट करते हैं थ्रू अ लैन केबल, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड नीचे के कॉर्नर में आपको दिखाएगा योर डिवाइस इज कनेक्टेड, और आपका जो कंट्रोलर कार्ड है, लाइक C10, C13, सॉरी C30, C50, जो भी है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि डिवाइस कनेक्टेड बाय द नेम ऑफ द कंट्रोलर। तो इससे आपको पता चलता है कि आपका डिवाइस सॉफ्टवेयर में कनेक्ट हो गया है। अगर इसके बजाय आपको लाल रंग में दिख रहा है और डिवाइस नॉट कनेक्टेड, मीन्स आपको करना है, आपको या तो अपने लैपटॉप की सेटिंग्स ठीक करनी है, या तो आपको अपना लैन केबल चेक करना है। Now, what we did, we connect controller. After connecting a controller, the second thing we have to do is you have to select your controller in the screen parameter setting. As I already discussed, in the screen parameter setting, you have to first select your controller, like which controller you have connected to the laptop, and what is the total screen size in terms of width and height that you want to control with that controller. तो सेकंड स्टेप, जब आपका कंट्रोलर कनेक्ट हो गया आपके लैपटॉप से, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको स्क्रीन पैरामीटर सेटिंग में जाना है। आपको अपना कंट्रोलर सेलेक्ट करना है, कोई सा भी कंट्रोलर हो, A3, A601, A4, A5, C15, C35, जो भी कंट्रोलर आपने कनेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद जो उसकी विड्थ है और जो हाइट है, जो पूरे स्क्रीन की विड्थ और हाइट है जो वो कंट्रोलर कंट्रोल करेगा, वो आप एंटर करिए और ओके पे प्रेस करिए।
इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया जाता है रोटेट का। अगर फॉर सपोज आप मान लीजिए आपकी स्क्रीन हॉरिजॉन्टल नहीं है, आपकी स्क्रीन वर्टिकल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रोटेशन डिग्रीज दी हुई है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 0 डिग्री एज वेल। तो अगर आपको रोटेशन करना है तो आप इसमें रोटेशन एनेबल करके रोटेशन की डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। There's a feature given here of rotation so that you can rotate the screen according to your need. For suppose you are not showing a horizontal screen, instead you are showing a vertical screen, you can change the degree of rotation. Now, as I discussed, there in send card parameter settings. In send card parameter settings, we basically detect the receiving cards, that how many receiving cards have been connected with the sending card. So you can see on the window, there's one option of start detecting. So whenever we click on this start detecting, total number of receiving cards will be shown in this box. And after that, we have to select the network port. This network port is disabled in C15, C35, A3 because these all controller only have one network port. But if you are using A4, A5, A6, A601, A602, A603 controllers, there are two phone ports. So you have to select that which network port you are using for your screen to. Thus you have to here, for suppose you have connected 10 receiving cards on network port 1 and 10 receiving cards in network port 2. So respectively you have to tell the width and height of those total 10 receiving cards, like how many pixels are there in width and how many total pixels are there in height. After that you have to just click on send. Sometimes you face a problem like they have connected a C35C controller or C15C controller with several receiving cards, but after doing the smart setting, the screen is not being displayed onto the screen. Basically, the problem is there is an option you can see here which is marked by a tick other, and in that option there is saying used only as send card. If you are using C15 and C35 only the data and you haven't connected any of the modules with with this controller, so you have to click this icon on first other and then use only a send, because that controller is only working as a sending card. Ultimately your modules are controlled by the receiving card. To click on this tick. So sometimes if you have done smart settings, if your smart setting is proper and still that you are not able to see the screen, so this is the reason why you're not able to see the screen. अब सेंड कार्ड पैरामीटर्स पे आते हैं। बेसिकली सेंड कार्ड पैरामीटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम अपना रिसीविंग कार्ड डिटेक्ट करते हैं कि हमारा टोटल स्क्रीन में कितने रिसीविंग कार्ड्स कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे एक आपका आइकन दिया हुआ है स्टार्ट डिटेक्टिंग का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे स्टार्ट डिटेक्टिंग पे, तो आपका जितना भी टोटल नंबर ऑफ रिसीविंग कार्ड्स है वो आपको इस रिसीविंग कार्ड 1 टू रिसीविंग कार्ड आपने। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट 1 दिया हुआ है। ये नेटवर्क पोर्ट 1 क्यों दिया हुआ है? तो जितने भी हमारे कंट्रोलर है, लाइक सी सीरीज के जितने भी कंट्रोलर हैं और ए सीरीज का सिर्फ ए3 कंट्रोलर जो है हमारा, और डी सीरीज का जितना भी हमारे पास कंट्रोलर है, इन सब में ये फीचर एनेबल नहीं होता है बिकॉज एक ही नेट आउटपुट पोर्ट होता है। बट अगर आप हमारा A4, A601, A602, A603 यूज करेंगे, तो उसमें जो है नेटवर्क पोर्ट रेंज करता है, कई में 2 नेटवर्क पोर्ट होते हैं और A6 में 4 नेटवर्क पोर्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है कि नेटवर्क पोर्ट किस नेटवर्क पोर्ट से आप डेटा आउटपुट ले रहे हैं रिसीविंग कार्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नेटवर्क पोर्ट 1 एक्स वाई विड्थ हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितना भी आप रिसीविंग कार्ड नेटवर्क पोर्ट 1 से कनेक्ट करें, तो आपको उसका विड्थ और हाइट यहाँ पे डालना पड़ेगा कितना का पार्ट में। उसके बाद अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारी स्मार्ट सेटिंग पूरी हो गई, स्टिल हमें मतलब डिस्प्ले नहीं मिल रहा है, हमने एक वीडियो डाली है, इमेज डाली है, हम वो स्क्रीन पे चल ही नहीं रही है।
तो वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अदर, क्लिक करते हैं तो आपका ये ऑप्शन अनेबल होता है, यूज ओनली एज सेंड कार्ड। तो क्या है, जब आप C15 यूज कर रहे हैं किसी रिसीविंग कार्ड के साथ और C15C या फिर C35C से आपने कोई भी मॉड्यूल कनेक्ट नहीं किया है, आपने रिसीविंग कार्ड से मॉड्यूल्स कनेक्ट किए हैं और C15C को आप ओनली एज अ सेंडिंग कार्ड यूज कर रहे हो, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा कि आप उसको सिर्फ यूज ओनली एज अ सेंडिंग कार्ड कर रहे हो। क्योंकि जब तक आप इस पे क्लिक नहीं करोगे वो उस C15 और C35 को भी एज अ रिसीविंग कार्ड काउंट करेगा। और वो आप चेक भी कर सकते हैं कि जब आप करेंगे, अगर आपने 4 रिसीविंग कार्ड कनेक्ट किया है तो आपको टोटल, जिसमें एक जो है आपका वो सेंडिंग कार्ड होता है। अब हम आते हैं आपका एच डी सेट पे। एच डी सेट कब खुलता है? एच डी सेट आपका तब खुलता है जब आप हार्डवेयर सेटिंग पे क्लिक कर, सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है हार्डवेयर सेटिंग्स पे। जब आप हार्डवेयर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये खुलता है एच डी सेट। एच डी सेट में बेसिकली ये क्या आपको ऑप्शन शो करता है? आपका सेंड पैरामीटर, सेक्शन सेटिंग, रिसीव कार्ड पैरामीटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सेंड कार्ड पैरामीटर्स हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्ड डिटेक्ट किया था, कनेक्शन। और रिसीव कार्ड पैरामीटर सेटिंग्स में क्या क्या होता है? रिसीव कार्ड पैरामीटर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। एक पैरामीटर्स होता है, एक हब सेटिंग, एक आपका होता है स्मार्ट सेटिंग। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपका स्मार्ट सेटिंग का ये ऑप्शन है। उसके बाद आपका जो पैरामीटर्स है, ये आपका रिफ्रेश रेट हो गया, ये ग्रेडेशन हो गया, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी हो गया, ये आपका रिफ्रेश रेट प्रायोरिटी हो गया, ब्राइटनेस मोड हो गया आपका। तो ये सारी जो है आपकी बेसिक पैरामीटर्स में आती है ये चीजें। हब सेटिंग्स में आपका आता है कि आपका कौन सा रिसीविंग कार्ड आप यूज कर रहे हैं। और जो थर्ड है आपका वो स्मार्ट सेटिंग। As you all can see on the screen, there's a software called SDSet. So when this software will appear, for this software you need to click on settings, and in setting you have hardware setting. When you will click on hardware setting, in the left hand side corner of your screen you can see your control card will be available there. First you click on that control card, this screen will come where it will show send card parameters, connection setting and receive card parameters. As I have already discussed, that consists of the how many receiving cards you have connected to the controller. You have to select the port, like which port you are taking the data from, and you have to mention that whether you are using sending card or you are using sending card also as a receiving card. In the connection setting, you have to how you connected the receiving card with one another, that we will discuss later. And in receive card parameters, there are three basic things, which is basic parameter settings, and one is smart settings. So in the basic parameters, there are refresh rate, gradation, clock frequency, brightness priority, etc. In the hub setting, you have to select which receiving card you are using, R501, R502, etc. And in the third one, there's an option of smart setting, which is basically used to find the scan type, basically used to make the configuration file of the module. You can see here in the left hand side, there is an in the left hand side corner, sorry, right hand side corner, there is a box information showing width and height. So basically this is the width and height that you have selected in the first column, like your width is 64 and your height is 32, and you can see 234 by 384. This is it can, so this width can go up to 234 and this height can go up to 384. Now there's an option of module parameters, that is universal module. In receive card parameters, you can see there is an option of universal module. So there are almost 95% modules that are listed here that you can use without doing any smart settings. You just need to know which is the manufacturer of the module, or what IC or what
Basically, decoding you have for the module, you can select it from here, and you don't need to do the smart settings. As you can see, some of the popular brands are mentioned here: Shailiang, GKGD, Shangli, Lamp, LCF, Double LR. So when you will click on these brands, you will see there are various modules ranging from P10 to P3, P2.5. So whichever module you are using of those brands, you can select it and you will get the configuration file without using any smart settings. सो नॉर्मली जब आप रिसीव कार्ड पैरामीटर में जाते हैं तो आपको एक कॉलम मिलेगा यूनिवर्सल मॉड्यूल का। यूनिवर्सल मॉड्यूल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें एक लिस्ट ऑफ ब्रांड्स मिलेंगी, जो कि मतलब ऑलरेडी 95% ऑफ द मॉड्यूल्स इसमें लिस्टेड हैं। आपको बस पता होना चाहिए या तो आपका ब्रांड कौन सा है, या तो आपकी आईसी कौन सी है और उसकी डिकोडिंग कौन सी है। उसमें आप जा करके अगर आपको पता है, फॉर सपोज आप शांगली का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, शांगली के मॉड्यूल पे क्लिक करिए, उसमें सीरीज आ जाएगी P10 से लेकर के P3 तक, P2.5 तक। उसमें मॉड्यूलेट करिए और ओके कर दीजिए। आपको इसमें स्मार्ट सेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ, अगर आपका मॉड्यूल उनमें से नहीं है, उन यूनिवर्सल मॉड्यूल्स में से नहीं है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है setting का। सो हम स्मार्ट सेटिंग में फर्स्टली करते क्या है, जब आप स्मार्ट सेटिंग खोलेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन जो वो पूछता है बेस का। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है स्क्रीन टाइप, आपको उसको बताना है कि आप सिंगल कलर यूज कर रहे हैं, कलर यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसमें देना है मॉड्यूल इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो लोग मॉड्यूल डायमेंशन डाल देते हैं। लाइक फॉर सपोज एक एग्जांपल हूँ, P6 का जो डायमेंशन होता है वो आपका होता है 192 by 192 mm का। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, विड्थ में जो डाल देते हैं वो इसमें 192 डालते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, इवन करते हुए भी देखा है। तो इसमें बेसिकली आपको डालना क्या होता है, जितनी एलईडीज आपकी विड्थ में है आप उसको काउंट करिए। नहीं तो आपके मॉड्यूल के पीछे भी लिखी हुई होती है कितनी एलईडीज हाइट में है, कितनी एलईडीज विड्थ में है। आप P6 का मॉड्यूल देखेंगे तो पीछे लिखा होता है उसमें 32x32। मतलब क्या होता है, 32 एलईडीज जो है हाइट में है, 32 एलईडीज जो है वो विड्थ में है। तो इसमें हमें डालना क्या है, मॉड्यूल इंफॉर्मेशन। ऊपर मेंशन किया हुआ मॉड्यूल इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक मॉड्यूल इंफॉर्मेशन हमें डालना है। तो इसमें अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ P6 का, तो इसमें जो मैं विड्थ डालूंगा वो मैं डालूंगा आपका 2। उसके बाद अदर में आता है चिप टाइप और चिप मॉडल। फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई मॉड्यूल है जिसका चिप जो है वो कन्वेंशनल नहीं है, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चिप है। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ SM16259DS। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, चिप टाइप में पहले मुझे कन्वेंशनल की जगह पे SM सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाद चिप मॉडल में जा करके मुझे वो नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मेरे आईसी का नंबर है। करता हूँ टाइप में, आप करना है कि आपका आईसी कौन सा है। आईसीएन है, एसयूएम है, एमबीआई है, एसएम है, कौन सा है? अगर कुछ भी नहीं है तो अगर वो कन्वेंशनल सेलेक्ट करिए। चिप मॉडल में आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आपने कोई आईसी बताई है कि अगर आपकी आईसीएन या आपकी एसएम की आईसी है तो उसका नंबर क्या है आईसी का, तो आपको चिप मॉडल में आईसी का नंबर सेलेक्ट करना है। उसकी डिकोडिंग के ऑप्शन में का जो डिकोड है वो 138 डिकोडिंग होता है। अगर कोई आपका 138 डिकोडिंग नहीं है तो पीछे मॉड्यूल में या फिर मॉड्यूल के आईसी में लिखा होता है कि कौन सी डिकोडिंग है। मोस्ट फेमिलियर डिकोडिंग आर 5266 एंड देयर आर 5958। दीज आर डिकोडिंग, वो जो कि मेंशन होगा उस पे। अब ये मोर देन 16 स्वीप क्यों होता है? मोस्टली मोर देन 6 होता है। दो ऑप्शन होते हैं, मोर देन 16 स्वीप और मोर देन 32 स्वीप। ये जो होते हैं मोस्टली और मॉड्यूल हैं जिनका जो स्कैन होता है वो मोर देन 16 होता है या फिर मोर देन 32 होता है। तो अगर आप कोई इंडोर मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका वो मोर देन 16 स्वीप है या फिर मोर देन 32 स्वीप है। तो जब आप ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट का। नेक्स्ट पे आप
पूछता है डेटा पोलैरिटी सेटिंग। डेटा पोलैरिटी सेटिंग में क्या होता है कि आपको दो कंडीशन दिए जाते हैं उसमें, कंडीशन ए एंड कंडीशन बी, और लिखा हुआ भी होता है नीचे कंडीशन ए और बी क्या स्टेट करते हैं। इज ब्लैक वाइल बी इज, मतलब ये है जब आप बी पे क्लिक करेंगे तो आप मॉड्यूल या फिर स्क्रीन जो आपने कनेक्ट की है वो वायलर की होनी चाहिए उस टाइम पे, वो पूरा व्हाइट लाइट शो करनी चाहिए उस टाइम पे। अगर बी पे आप क्लिक करते हैं और वो व्हाइट शो कर रहा है तो मतलब आपका एक टर्म सही हो गया उसमें। अब दूसरा टर्म है ए इज ब्लैक। सो जब आप ए पे क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन अगर ए पे ब्लैक होती है तो आपका ये जो डिस्प्ले स्टेटस है और ये जो कंडीशन दिया हुआ है बी, नेक्स्ट कर दीजिए फिर आगे वाले स्टेप। So if your is not mentioned in the universal module, so what option you have? You have to do the smart settings of the module. So when you will click the smart setting of the module, so there you can see an option basic set in basic single and double color. You have to give what is the how many pixels are there in width of one module screen only one. So for suppose I am taking an example of P6. So the total number of LEDs in 32. So I will just write down here 32. Are some selections like chip type. So what are those? Normally, most of the modules come with conventional chip, but some are with extraordinary chips like SM, ICN. So if your module is having these sort of chips, you need to just select the chip type. In chip type, you have to select the which basically chip is there. ICN chip, MBI chip, SM chip, SUM chip. So you just have to select which series of chip is there. In the chip model, you have to select the number, like what is the number of that IC. For suppose the very famous IC is MBI. So in chip type, I will select MBI, and in chip mod, I will select MBI 5124. Now there's an option of decoding. Most of the modules come with 138 decoding, but there are some other modules that have some other decodings like 5266, 5958. Some of the modules also don't have any decoding, so you just have to click on no decoding. So basically decoding means that, and that is mentioned behind the module or on the chip or on the IC that is placed behind the modules. Now there is an option of more than 16 sweep. So more than 16 sweep is only meant when you are using a module with more than 16 scan, and those modules mainly comes in the category of indoor modules. There's one more option, more than 32 sweep. That's also if you are using a module more than 32 scan, that's also for indoor basically. So when you will complete this basic settings, you have to just click on next. After clicking on next, you will see a window of data polarity settings. For data polarity setting, there's an option of, there is a display status saying that A is black while B is white. So whenever you will click on A, the screen should go black, and whenever you click on B, the screen should go white. So if this status is correct, then just click next for the other step. So yeah, in the previous step, when I clicked on A, it was black, and when I clicked on B, it was white. So now it is asking for another status, A is brighter than B. So when I will click on A, the screen will go brighter, and when I will click on B, the screen will reduce its brightness. So if if I click on B, the screen is glowing white, and if I click on A, the screen is more white. So now अब जब मैंने पिछले स्टेप में नेक्स्ट कर दिया, जबकि मेरा ए पे ब्लैक था और बी पे वाइट था, तो जब अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एक डिस्प्ले स्टेटस एक और आता है कि अब ये पूछ रहा है ए। इसने फिर से मुझे दो कंडीशन दी। जब मैं ए पे क्लिक करूंगा तो स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्राइट होनी चाहिए, और जब मैं बी पे क्लिक करूँ तो स्क्रीन जो है कम ब्राइट होनी चाहिए। अगर मैंने दोनों पे चेक करके देख लिया और ये स्टेटस जो डिस्प्ले स्टेटस है मेरा सेटिस्फाई होता है, सो आई विल मूव नेक्स्ट। द फोर्थ स्टेप इज color signal channel check.
Basically color signal channel check. So you are getting now four states: state A, state B, state C, and state D. State A means when you will click on A, the screen should show red. When you will click on B, the screen should show green. When you click on C, the screen should show blue. When you click on D, the screen should show black. So you have to test it. For suppose when you click on A and in your software the screen is showing red and in the module the screen is showing, so you have to just change the color in the software. You have to click blue in the software. I am telling you, you have to do this setting by observing your module, like which color is there in the module. You have to select that color in the software. So जब हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, फोर्थ स्टेप बेसिकली हमारा है कलर सिग्नल चैनल चेक का। तो इसमें हमें चार स्टेट्स दिए जाते हैं। चार स्टेट्स में होता क्या है, ए पे ब्लैक है, बी पे ग्रीन है, सी पे ब्लू है और डी पे ब्लैक है। तो इसमें होता क्या है कि जब हम ए पे क्लिक करेंगे स्क्रीन पे हमारा रेड शो कर रहा है, कई बार मॉड्यूल पे भी हमारा रेड शो करता है। जब हम बी पे क्लिक करेंगे, बी पे हमारा सॉफ्टवेयर में ग्रीन शो कर रहा है, मॉड्यूल में भी कई बार हमारा ग्रीन शो कर रहा है। कई बार क्या है, कहेंगे ए पे सॉफ्टवेयर में तो रेड शो कर रहा है लेकिन आपका जो मॉड्यूल में है वो ब्लू शो कर रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूल में जो भी कलर शो हो रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने हैं। अगर मान लीजिए आपने ए पे क्लिक किया, ए पे आपका सॉफ्टवेयर में रेड दिखा रहा है और अगर आपका मॉड्यूल में जो है ए पे ब्लू दिखा रहा है, तो आपको सॉफ्टवेयर में ए पे ब्लू चेंज करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं ये पॉपअप दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे एरो पे तो आपका कलर आ जाता है ग्रीन ब्लू। आपका ए पे जो भी कलर दिखा रहा है आप उसको क्लिक करेंगे। जब आपका ये सेटिस्फाई हो जाता है, जो कलर आपका मॉड्यूल पे है वही आपका कलर सॉफ्टवेयर में भी है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पे जो सेटिंग आता है वो आता है चेक लाइंस बाय वन डेटा सिग्नल स्कैन। तो इसमें पूछता है हाउ मेनी लाइंस lit इन वन मॉड्यूल्स। सो इसमें बेसिकली चेक क्या करना है, कई बार होता क्या है कि कस्टमर क्या करता है, उसने पूरी एक स्क्रीन कनेक्ट की हुई होती है, पूरी एक स्क्रीन कनेक्ट की होती है, तो स्क्रीन में वो कंफ्यूज हो जाता है कि कितनी टोटल लाइंस ब्लिंक कर रही है। तो वो बहुत सारी लाइंस काउंट कर लेता है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा है इन वन मॉड्यूल। बस आपको एक मॉड्यूल पकड़ करके चलना है, पूरी स्क्रीन में से बस आप एक मॉड्यूल में कितनी लाइंस ग्लो कर रही है टॉप टू बॉटम, आप उसको काउंट करिए। जैसे अभी जो सामने आप इमेज देख रहे हैं, ये आपका P10 का इमेज है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम इसमें टोटल 8 लाइंस ब्लिंक कर रही हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट बोलना है 8, जितनी भी आपको लाइंस ऑब्जर्व हो रही हैं आप उसको वहां पे डालेंगे। So the sixth setting is check lines by one data signal scan. So when you will click next after color checking red, green, blue, black, you will see it will ask you how lines lit in one module. Sometimes what the customer does, it connects the whole screen and it gets confused that how many lines are blinking in one screen. So it is clearly mentioned over there lines lit in one module. So you only have to check one module, how many lines are blinking module. For example, here you can see this is a P10 module and you have to just count how many lines are blinking from top to bottom. Just count, total are 8 lines. So instead of 16 written in the software, you have to check it 8. You have to correct it and put 8 over there and click next. Now it is saying that determine the scan module. So in the next step, when you clicked on how many lines blinking on one module, it is showing again it is asking how many lines lit in one module. Again you have to tell him how many lines lit in one module, means in one module now how many lines you can see. As in the picture you can see there are only two lines, so you have to just select two here. जब आप पिछले वाले स्टेप में नेक्स्ट करेंगे जिसमें आपका पूछ रहा था हाउ मेनी लाइंस lit इन वन मॉड्यूल, जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये पूछेगा आपसे हाउ मेनी लाइंस lit इन वन मॉड्यूल। ये फिर से वही पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस lit इन वन मॉड्यूल, बट इस बार यहाँ पे 6 लाइन नहीं है। यहाँ पे आपको स्कैन सेलेक्ट करना है, तो स्कैन के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि 2 लाइन है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है इसमें। नाउ द मोस्ट important step of this smart setting is scan the sequence.
In this, when you will enter in this step, you can see a small dot is blinking on your module, on your screen, whatever you have connected. If you have connected only one module, you can see that one dot is blinking on the module. And if you have connected a screen, you can see several dots blinking. Again, you just only have to take one module in consideration. You only have to take one module, not the whole screen. Only one module you have to take. So when you can see a dot blinking on one of the module, you just have to follow the trace. Like for suppose in this figure, you can see that in the ninth row, you can see that it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This means that in the ninth row, the LED is blinking. First, it was blinking on the first, then it changed the position onto the second, then it changed the position to third, then it changed the position to fourth. Means in one module, you just have to follow that dot. Means wherever the dot is going, you just have to follow the same trace in the software. जो स्मार्ट सेटिंग का जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका स्कैन सीक्वेंस. उसमें होता क्या है कि जब आप इस लास्ट स्टेप में आएंगे तो आप अपने सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि आपका टेबुलर फॉर्म में एक सॉफ्टवेयर अपीयर हुआ, एक विंडो अपीयर हुई है और आपकी स्क्रीन पे या फिर आपके मॉड्यूल पे डॉट ब्लिंक कर रहे हैं. अगर आपका स्क्रीन है तो बहुत सारे डॉट ब्लिंक करेंगे. अगर आपका एक मॉड्यूल है तो आपका सिर्फ मॉड्यूल, उस पर्टिकुलर एक मॉड्यूल पे डॉट ब्लिंक करेगा. किसी भी पोजीशन पे वो डॉट ब्लिंक कर सकता है. फर्स्ट पोजीशन पे जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट पोजीशन पे डॉट ब्लिंक करे. वो डॉट किसी भी पोजीशन पे ब्लिंक कर सकता है. फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फिफ्थ रो, नाइन्थ रो, एनी ऑफ द रो इट कैन ब्लिंक. आपको जस्ट ध्यान क्या देना है कि वो डॉट कहाँ ब्लिंक कर रहा है. सेम पोजीशन आपको सॉफ्टवेयर में मार्क करनी है. अगर आप इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि इसमें नाइन्थ रो में इसमें कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 तक ये गया है. तो इसका मतलब ये है कि इस मॉड्यूल में कॉलम नंबर 9 से डॉट ब्लिंक हो रहा था. ठीक है, और वो 6 तक गया है. मतलब रो नंबर 9 पे डॉट ब्लिंक हो रहा था और वो 6 कॉलम तक गया है. उसके बाद इस डॉट ने जो है अपना पोजीशन चेंज कर लिया है. सिमिलर वे में आपको क्या करना है कि आपको जस्ट ट्रेस करना है कि कहाँ कहाँ वो डॉट जा रहा है, कहाँ कहाँ वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. सेम आपको सॉफ्टवेयर में करना है. तो जब आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपका लिखा हुआ आएगा स्मार्ट सेटिंग डन और ओके का आपका ऑप्शन आएगा और आपकी स्क्रीन पे ऐसी तिरछी लाइंस आएंगी जैसा आप मॉड्यूल पे देख रहे हैं. तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो स्मार्ट स्कैन है, जो आप मॉड्यूल के लिए बनाना चाहते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो बन चुकी है. First we discussed send card parameters, then we discussed receive card parameters. Now we are discussing the third most important thing, connection settings. So what is basically connection setting? As you can see in the image, there are 9 cabinets connected, and total there are 9 receiving cards placed in every cabinet. So you just, in this step, you have to justify that how you have connected, like how from top to bottom it is going, from left to right it is going. So you just have to trace that, you just have to tell the sequence, like from one receiving card to second receiving card, how the LAN cable is moving. It is nothing, just only to tell the sequence to the sending card that my receiving card number 1 is this and my receiving card number 9th is the last one. So you just have to tell the position how you have connected the receiving card through a LAN cable. Now you can see here and in the image, like it is given width and height of the receiving cards. For every receiving card it is given. For the first row it is given 192 is the width of one receiving card and 128 is the height of one receiving card. So the connection setting we have to do the same. We have to tell how many receiving cards and how many receiving cards put in a column. So here you can see that in the row it is 2 receiving cards and in the column there are 3
there are six receiving cards, and for every receiving card you have to justify what is the width and what is the height of each receiving card. So once you have tell the width and height of each receiving card, you just have to tell what is the connection of one receiving card to another, means what is the how the LAN cable is connected with each other. So as you can see, there is a quick setup, and quick setup, fourth is clicked over here. So this means that first receiving card is to my right hand side in the bottom, and the second receiving card is moving towards left of the side of the first receiving card, and then above third there is fourth receiving card, and after fourth it is fifth and sixth. So it is very easy to figure out how you have connected. Just assume you are in front of the screen, or just assume you are in the back of the screen, and you can just select these quick setups one by one to check which is your quick setup. कनेक्शन सेटिंग बेसिकली क्या होता है, हमने सेंड कार्ड पैरामीटर देख लिया जिसमें हमें रिसीविंग कार्ड कनेक्ट करना होता है, हमें रिसीविंग कार्ड डिटेक्ट करना होता है, रिसीव कार्ड पैरामीटर हमने देख लिया जिसमें हमें स्मार्ट सेटिंग करनी होती है। अब कनेक्शन सेटिंग में हमें क्या करना होता है, कनेक्शन सेटिंग में हमें सॉफ्टवेयर को बताना होता है, हमें सेंडिंग को बताना होता है कि हमने टोटल कितने रिसीविंग कार्ड्स कनेक्ट किए थे, और वो रिसीविंग कार्ड किस पोजीशन में कनेक्ट किए हैं, लाइक रोज, कितने रिसीविंग कार्ड रोज में कनेक्टेड है, कितने रिसीविंग कार्ड कॉलम्स में कनेक्टेड है। उसके बाद एक रिसीविंग कार्ड से दूसरे रिसीविंग कार्ड में लैन केबल कैसे जा रहा है, मतलब आपका रिसीविंग कार्ड नंबर 1 कौन सा है और आपका रिसीविंग कार्ड नंबर लास्ट कौन सा है। और यहाँ पे हर एक रिसीविंग कार्ड को आपको बताना है कि कितने मॉड्यूल हाइट और विड्थ में हर एक रिसीविंग कार्ड से कनेक्टेड है, मींस यू हैव टू जस्टिफाई द विड्थ एंड हाइट ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल रिसीविंग कार्ड। और यहाँ पे आपके अ, 8 जो है क्विक सेटअप दिए हुए हैं, ये बेसिकली है कि आपने लैन केबल को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक एक करके सारे ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, एक एक करके आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ना तो, एंड इट विल हेल्प यू। Now, if after everything is done, after the send card parameters have been done correctly, after this connection setting has been done correctly, after you have made the configuration file of the module, now just you have to do is click on send. Once you click on send, all the settings have been sent to the sending card, and through sending card, all those settings will be sent. Now, our SD set is complete. All I can teach you about SD set is over. The send card parameters, the second is connection setting, and the third one is receive card parameters. Now we come on to the main functions of HDPlayer. What are the main functions of the HDPlayer? As you can see in the menu bar, there are 5 options. One is file, the second is setting, the third is control, the fourth is language, and the fifth is help. In the help section, you can see what is the version of your software. Sometimes the mistake what customer do is they are using a new version control card, and they are using an old version of the software. So sometimes that also mismatches and the display does not come actual what it should be. The second last is language. You can change the language according to your need. It has several languages from Chinese to Hindi, not Hindi, from Chinese to English, all are according to the countries. In the control, you can see several controls are there, like device information. It will show about device. It will show about the Wi-Fi settings, brightness settings. It will show about the play mode settings, like you want to use if you're using a dual mode control card. If you want to shift synchronous from asynchronous, then you can control from here. In settings, as I told you, there are several settings like hardware settings, screen setting, cloud server settings. In the second, you can see a toolbar. In toolbar, you can see program, custom area, video, photo, text, single line text, 3D text, office, clock, animation, time, temperature. There are several options which you can use. First, you created a screen, then you have to select a program. Like
in that screen what program you want to push. And after clicking on program, you have to select which program you want to select, either video, either photo, either text, either 3D text, either time, clock, etc. There is one attribute area you can see here about the layout of your screen, and it will give you details about, for suppose if you have selected a text, you can change the way of the text displaying, like random, automatically move left, move right. So these options you can explore from the property. This is a status of the controller. Now when you select a video in a program, so there is an option of video interception and transcoding. You can use these two options, video interception and video transcoding, and you can use accordingly, like what you want to trim the video, how you want to play the video. If you want to make the video smaller, you can do all these things from here. After when you create a program, you have added several contents like video, photo, image, you have added all those things. Then what you have to do is you have to just click send, and all the program details, all the datas you have created will be sent onto the sending card, which is distributed among the receiving card, and at the last you will see the full screen in front of you. Now, how all you can send the datas to the sending card? There are basically three ways. One is through UDisk, one is through Wi-Fi, one is through what you can say LAN cable. Also, you can push the data through cloud. Yesterday I discussed about that. So here you can see we are sending a data by UDisk. So there are basically two ways. One is like if you are using any of the controller and you just want to play a video, only video, no image, no text. If you only want to play a video, the simple and easy step is just copy that video MP4 file into the pen drive and just connect it to the controller. It will display the video. The second step is if you want to send the data to through USB and through software. So first you want to do is first you want to make a program in the software, and then you have to export that program into the pen drive or into the U disk. When you are copying that, you are getting there two modes. One is copy and one is play. So copy means whenever you send a program to the USB, and when you connect the pen drive to the controller, so that program will be copied in the controller memory, and after that you can remove the pen drive. The second option is play, means till the pen drive is inserted in the controller, only that time you can see the video is being played or the content is being played, and whenever you will remove the pen drive, that will disappear. The third one, adding a picture, like you can see after video there's an option of picture. You can add picture, you can add GIF. When you will select a picture, you can see the file supported over there, like GIF, .jpg, .jpeg. You can select all the formats of the file that is being supported in the software and that is being supported by this software. So all these things, I must be knowing that you all have gone through these all steps. Now it is an option of 3D text. You all must be familiar with this 3D text. It is just basically a 3D text. You just have to enter a text. You have to select border style. You have to select foreground style. You have to select colorful words. There are several options. There are 3D shadows. There are shaped borders. Whatever is mentioned in the software, whatever you need, you can select it accordingly.
Now there is an op- there are 19 countries mentioned in the software and almost cities mentioned in the software. You can select any of the city from any of the country and you can check the weather of that country and you can just broadcast this onto your screen. For that, you basically need an internet connection for using this, or your laptop should be connected to the internet. No, basically you need an internet connection in the controller so that your weather information get updated time to time. Now yesterday many of the customers were asking that without using a LAN, how we can connect internet in a controller. So let me repeat again, without using a LAN cable, how you can connect internet in a controller. So let me answer you all. In the control setting, there is one Wi-Fi setting. In Wi-Fi setting, you can see mode AP. Instead of this mode AP, you have to select the station mode. And in this mode, you can see the Wi-Fi is over there, and you can connect the respective Wi-Fi which you want. So yes, without uh, connecting a LAN cable, you can use this option. Also, uh, this function will only work in a Wi-Fi controller, not in a simple controller. Let me repeat again, this function will only work in a Wi-Fi controller, not in a simple controller. So you must use a Wi-Fi controller for this. Now there is one option of set trial authorization dates. I think most of you have used this also. This function, basically this function is, let me tell you by giving an example. For suppose you have given credit to some customer and you are not sure whether he will return you credit, and he is asking that after 15 days he will return or pay back the credit amount. So what you can do is you can set a trial authorization date over here. Enter the day, means you can enter the days over here, like how many days you want to authorize this controller to just support the content. Like for suppose a customer is saying I will pay you the return amount in 10 days. So I will just select 15 days over here. I will put my password and I will just confirm that password. After that it will show an expiry date also, expiry date and expiry time. So what it will do after 15 days gets complete and after that time gets expired, so it will just uh, put a very big lock onto the screen and you cannot push any of the content onto the controller. So it is very useful for those who are giving credit to the customers or who are not having trust to the customers that they will pay them back. So this customer will help. There's one more option. It's not mentioned over there. There's one more option of what you can say startup screen. So like for suppose everyone should have a TV at their home, like LG TV. I'm taking an example of LG TV. So whenever you will switch on the TV, the LG logo comes on the screen. In the similar way, if you want that, if you have supplied any screen to any of the customer, and you want that your company logo should appear first onto their screen, so you can just use this option, startup screen option, given in the control section in the device information. On startup screen, just import the image of your company or your logo of your company and just click on send or just click OK over there and set it. So any of the screen that controller using, it will display first your logo, then it will switch to them. So if you have any query, if you have any questions regarding any of the topic, you can ask. My colleagues will reply. So today I just end this session here only. Thank you all. Thank you all for coming, and it's all a pleasure. And it's been a pleasure
to talk with you all.